Assalamu alaikum, dear 8th class students. I hope you all are well and I welcome you all in my offline class. Dear students, as you know that we have completed a poem just from your English book, and now today we will learn the questions. We will try to do the textual questions of this poem, and also we will do some language work. Here from the textual questions, here is a question number 1. And dear students, first you open your English book, and at the last of this poem and the last of this page you will see the textual questions. And the number 1 question here asks as, what do the opening lines of the poem describe? Okay, what do the opening lines of the poem describe? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहली लाइन्स है इस पोइम की, यानी कि जो पोइम यहाँ पे ली गई है समर एंड विंटर, इसकी जो पहली लाइन्स है वो हमें क्या डिस्क्राइब करती है। तो प्यारे बच्चों, आप सिंपल में से इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स एन आफ्टरनून इन द सनी मंथ ऑफ जून। ओके, पोएट जो है यहाँ पर ये एक आफ्टरनून जो है, एक दोपहर का वक्त जो है वो यहाँ पे ये डिस्क्राइब करता है। वो मंथ जो है वो चल रहा होता है मंथ ऑफ जून, और उस टाइम हमें पता है कि जून का महीना जो है होता है वो बहुत ही गर्म होता है। उस टाइम बहुत धूप होती है, बहुत धूप खिली होती है। तो ये पॉइंट जो है कहता है कि एक आफ्टरनून थी और जून का मंथ था। ही सेज दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सनी आफ्टरनून व्हेन एवरीथिंग सीम्ड टू बी फुल ऑफ जॉय। ओके, और सिंपल में से इसका आंसर लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स एन आफ्टरनून in the sunny month of June. He says that it was a beautiful sunny afternoon when everything seemed to be full of joy. Okay, now dear students, this question number 2 here is, what is the effect of the shining sun on the objects of nature? On objects of nature, क्या असर जो पड़ता है, जो ये शाइनिंग सन होता है इसका क्या असर पड़ता है जो नेचर कुदरत ने जो यहाँ पे ये चीज़ें बनाई है हमारे इर्द गिर्द, तो इन चीज़ों पर इस शाइनिंग सन का क्या असर पड़ता है। we can write in simple words, all the objects of nature seem to be full of joy under the sun. Okay, all the objects of nature seem to be full of joy under the sun. And number 3rd question is, how is winter described in the poem? How is winter described in the poem? यानी कि विंटर को किस तरह यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि विंटर जो ये पोइट है इसने कैसे डिस्क्राइब किया है ये विंटर। हम सिंपल में लिख सकते हैं, विंटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ टेरेबल वेदर इन द पोएम। ओके, birds had begun to die in deep forests, the fishes lay shut-up in the frozen water, people living in comfortable homes had gathered around big fires and yet they felt cold. Okay, now there is question number 4, explain the following lines. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, the cornfields and the reeds, the willow leaves that glanced in the bright breeze and firm foliage of the larger tree. Now write the answer of these lines. In these lines the poet describes a bright and cheerful afternoon. He says that everything on the earth seemed to be full of joy. The weeds, the water, the cornfields, the reeds, the willow leaves glittering in the gentle breeze, the firm leaves of larger trees, and in fact all things under the sun seem to be full of joy. Dear students, now here is question number 5. How does the poem end? जो ये पोएम है ये कैसे एंड, इसका एंड ऑफ कैसे लिख सकते हैं कि क्या बताया गया है एंड में इस पोएम के। द पोएम एंड्स ऑन ए सैड नोट। ओके, द पोएम एंड्स ऑन ए सैड नोट। हमें पता है कि पोएम जो है ये मतलब मेरी दुख के साथ ये इसको कंप्लीट कर रहा है। द पोएट सेज दैट ड्यूरिंग विंटर पीपल लिविंग इन कंफर्टेबल होम्स गैदर अराउंड बिग फायर्स एंड येट दे फील कोल्ड। ओके, the poet feels sad to think the old homeless beggars who have no place to hide their head in such terrible weather. Okay, now dear students, in this way we have completed also the textual questions of this poem, and inshallah I will try to also give you the answer. I will send the answer of this questions into your group, and then तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।